Hello friends, welcome to the new series. This is the series of Tinkercad block coding. So today we are going to control servo motor using potentiometer. आज हम servo motor के angle को control करेंगे using potentiometer. So for that I'll be using my Arduino Uno. I'll require a potentiometer and I'll require a servo motor. Okay. So I have three components: an Arduino Uno, a potentiometer and a servo motor. I will use a breadboard to make my necessary connections. So मैं breadboard का इस्तेमाल करूंगा मेरे connections बनाने के लिए. तो आइए हमारे component study कर लेते हैं. तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको एक नॉब होता है जिसको घुमाने से हम वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं. सो इसके 3 लेग्स होते हैं. इट हैज़ 3 पिन्स, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड द सेंट्रल पिन इज द वाइपर. सो टर्मिनल 1 is connected to the 5 volt, terminal 2 is connected to ground, and the pin will be connected to any of the analog pins of the Arduino. Similarly, servo motor is a motor which is a geared motor which uses gears to transmit motion. So it is a high torque motion. The advantage of servo motor is it can be set on various given prescribed angles between 0 to 360. So it can rotate on any given angle from 0 to 360 degrees. It doesn't go around a complete circle, means it can't go above 360 degrees. It will come back to 0 degrees. So that is the travel of a servo motor. Servo motor also has 3 pins. servo motor को भी 3 pins होते हैं. एक होती है सिग्नल पिन जो लगेगी आर्डिनो के डिजिटल पिन पे, एक होती है पावर पिन जो लगेगी 5 वोल्ट से, और एक होती है ग्राउंड पिन जो लगेगी ग्राउंड से. सो लेट अस मेक द कनेक्शंस. आइए कनेक्शंस बनाते हैं. ब्रेडबोर्ड के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ. ब्रेडबोर्ड के 2 रेल्स होते हैं, ऊपर 2 नीचे रो. दोनों रेल्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो आप देख पा रहे हो ये सारे पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी तरह नेगेटिव, उसी तरह नीचे के जो बीच के दो रेल्स है वो सारे वर्टिकली कनेक्टेड है फ्रॉम ए टू ई एंड एफ टू जे. तो हम ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन जनरली, ब्रेडबोर्ड का यूटिलाइजेशन जनरली इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस को स्टडी करने के लिए करते हैं. तो आइए हम कनेक्शंस बनाते हैं. तो सबसे पहले 5 वोल्ट्स. I'll make the rail positive. Similarly negative is generally shown by black color. So 5 volts on this positive rail, negative on the negative rail. I'll convert the given rails and I'll connect them with positive and negative. So now this rail is my positive, so I'm giving it red color, and this rail is my negative. This is black color. So this is all positive, so I've connected positive rail. Similarly this is all negative. So I have now my rails ready. Now let us connect my potentiometer. So my potentiometer, one end is to 5 volts, so I'll make this red. Other end is to ground, so I'll make this black. So I have connected my potentiometer. The central terminal of the potentiometer will be connected to analog pin. So I'm connecting it to A0. So my connections related to potentiometers are ready. Now power terminal to 5 volts and ground to ground. So I'll change the colors. I generally show power by red color. Now signal pin. Servo motor is a device which is working on digital signals. So signal pin will be on digital pin number 3. So I'll just a moment, I'll make the connections proper. तो मैं ये जो पिन है सिग्नल पिन, वो मैं पिन नंबर 3 पे लगाने वाला हूँ आर्डिनो के. डिजिटल पिन नंबर 3.
Okay, मेरे connections अभी ready है. All my connections are ready. Now let us code it. So I have two blocks, start and forever. So let us do on start. I should get a message of let's control the servo motor. So I'm putting serial print. Let's control the servo angle. Okay. Second now. So first thing I'll create two variables. One is for potentiometer, so I'm naming it as pot, and one is for output, so I'll name it as output. So I have two potentiometer, two variables created. Now first thing what I'll do is set output, set pot, that is my potential variable, to read the analog pin A0, as my potentiometer is connected to A0. So set the variable pot, get the value which is placed on A0. I hope you understood that whatever reading we are going to get on A0 is going to be utilized or will be saved in pot or variable named as pot. Now secondly, let us set our output. So output to map my pot, that is to map my potentiometer reading from 0 to 180. Okay, so see here. So set output to map my potentiometer reading from 0 to 180. Now let us get an output. So I'm saying serial print serial print variables output with new line. Okay, so whatever output value I'm going to get, I can print it on my serial monitor. And last we need to rotate the servo, so that is my output. So rotate servo on pin number, servo is on pin number 3, to how many degrees. So the number of degrees based depends upon the output, that is output degrees. So whatever output I'm going to get, that many degrees my servo will be rotated. So I hope it is clear. So this is the text version of the code. So what I have done, on the start I'll get a message, let's control the servo angle. Then whatever value is read by A0, which is the analog pin, will be saved in pot. Now that value saved in pot will be utilized in the range from 0 to 180 to set it to output, and whatever output value is there will be printed on the screen with cursor moving to new line, and servo on pin number 3 will rotate to the degree of output. So that is my code. So I think I am ready with my code. मेरा कोड रेडी है, कनेक्शंस रेडी है. आइए टेस्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो सीरियल मॉनिटर पे मैं रिस्टार्ट करता हूँ. ओके, ऊपर आके गया होगा मैसेज, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर ऑन स्टार्ट. ठीक है, फिर अभी मुझे 180 का वैल्यू दिखा रहा है. नाउ लेट अस रोटेट माय पोटेंशियोमीटर. सी, सो जितना मैं पोटेंशियोमीटर घुमाऊंगा उतना मेरी सर्वो मोटर घूमेगी. सी, if I bring it back. Okay, so I hope you must have liked today's project. If you want me to explain the code again, I'll explain it in Hindi. तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मैंने जो मेरे दो डिवाइसेस लगाए हैं, एक पोटेंशियोमीटर और एक सर्वो मोटर. मेरा जो पोटेंशियोमीटर है वो मैंने A0 पे कनेक्ट किया है, उसका वाइपर पिन. उसी तरह मेरा जो सर्वो मोटर है उसका मैंने सिग्नल पिन, डिजिटल पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है. अभी कोड देखते हैं.
तो सबसे पहले ऑन स्टार्ट मुझे एक मैसेज मिलेगा जो मुझे सीरियल मॉनिटर पे लेट्स कंट्रोल द सर्वो एंगल ये मैसेज दिखाएगा। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है पॉट। सो सेट पॉट टू रीड एनालॉग A0। इसका मतलब है कि A0 पे जो भी रीडिंग आ रही है वो पॉट पे दे दीजिए। ओके, सो A0 पे जो भी रीडिंग आएगी वो पॉट को मिल रही है। उसके बाद जो पॉट की रीडिंग है उसकी रेंज 0 to 180 है, उसकी वैल्यू आउटपुट को दे दीजिए। तो मैंने पॉट पिन डिसाइड किया, मैंने आउटपुट पिन डिसाइड की, फिर मैंने ऑर्डर दिया सीरियल मॉनिटर को कि आउटपुट का जो भी वैल्यू है इधर जो आया है उसका उसको प्रिंट कर ऑन द स्क्रीन। सो उसको मैंने प्रिंट किया। सो मुझे आउटपुट की वैल्यू दिख रही है जैसे अभी 180 दिख रही है। और उसी तरह डिपेंडिंग अपॉन माई आउटपुट वैल्यू मैंने ऑर्डर दिया है रोटेट द सर्वो ऑन पिन नंबर 3 to whatever output value. So that is that many number of or that many angle of rotation. So you can see the code now, it is still active. Now right now 0 degrees. Now I am increasing. See. Okay. So I hope you have liked today's video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Jai Hind. Thanks for your time.